Assalamualaikum dear students. In this video we are going to share with you pedagogy MCQs. असांजो अॼु जो टॉपिक आहे concepts of reflective practices or feedback. At the end of this video you will be able to learn reflective practices or feedback, Gibbs reflective cycle and stages of Gibbs reflective cycle, 5 R's of reflective practice, reflection in action during and reflection on action after. Question 1. What is the primary purpose of reflective practice in teaching? Teaching में reflective practice जो primary purpose छा आहे? Option A. To document student attendance. Option B. To improve professional practice and teaching method. Option C. To memorize teaching techniques. Option D. To punish students. To improve professional practice and teaching methods is the primary purpose of reflective practice in teaching. Professional practice and teaching method के improve करण primary purpose आहे reflective practice जो teaching में. Right answer B. Question 2. Which reflective tool help teachers record daily thoughts, experiences and analysis? Option A. Question book. Option B. Reflective journal. Option C. Test paper. Option D. Lesson plan. Reflective journal is a reflective tool that help teachers record daily thoughts and experiences and analysis. Reflective journal reflective tool आहे जेको टीचर खे मदद करे थो डेली रिकॉर्ड ठाहिण लाइ थॉट्स, एक्सपीरियंसिस ऐं एनालिसिस जा. राइट आंसर बी. Question 3. According to Skeon, what is the process of reflecting while performing a task called? Option A. Reflection on action. Option B. Reflection in action. Option C. Reflective writing. Option D. Technical reflection. Reflection in action is the process of reflecting while performing a task. Question 4. Reflection in action refers to. Reflection in action छाखे रेफर करे थो? Option A. Reflecting after the lesson is over. Option B. Reflecting before planning the lesson. Option C. Reflecting while teaching. Option D. Ignoring student behavior. Reflection in action refers to reflecting while teaching. Reflection in action रेफर करे तो reflecting while teaching. Right answer C. Question 5. A reflective teacher focus on. Reflective teacher जो focus छाते हूंदो आहे? Option A. What went wrong with students? Option B. Why students are weak? Option C. Analyzing past performance for future improvement. Option D. When is the next holiday? A reflective teacher focus on analyzing past performance for future improvement. Reflective teacher जो focus हूंदो आहे analyze करण जी past performance future जे improvement लाइ. Right answer C. Analyzing past performance for future improvement. Question 6. Reflective teaching is best described as a. Option A. Linear process of planning lessons. Option B. Static method of classroom management. Option C. Passive evolution of student marks. Option D. Cyclic process of thinking about teaching. Reflective teaching is best described as a cyclic process of thinking about teaching. Reflective teaching best describe करे थी cyclic process thinking जो teaching जे बारे में. Cyclic process तव्हां डायग्राम में ॾिसी सघो था. फर्स्ट फेज़ आहे plan, सेकेंड apply, थर्ड access, फोर्थ लर्न खां पोइ वरी शुरू थींदो प्लेन खां. हीउ हिकिड़ो साइकिल जेको आहे पूरो हलंदो रहंदो. Question 7. The 5 R's of reflective practice include reacting, recording, reviewing, revising and dash. Option A. Repeating. Option B. Reconsidering. Option C. Reworking or reaccessing. Option D. Removing.
The 5 R's of reflective practice include reacting, recording, reviewing, revising, and reworking. Right answer C. Reworking. 5 R reflective practice में include आहिनि ही 5 practices: reacting, recording, reviewing, revising, reworking या reassessing. Right answer C. Question 8. What is the first stage in Gibbs reflective cycle? Gibbs reflective cycle जी पहिरीं स्टेज कहिड़ी आहे? ऑप्शन ए evolution, ऑप्शन बी एनालिसिस, ऑप्शन सी डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी एक्शन प्लान. Description is the first stage in Gibbs reflective cycle. तव्हां हिन डायग्राम में ॾिसी सघो था गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जूं 6 स्टेजिस आहिनि. फर्स्ट आहे डिस्क्रिप्शन, सेकेंड आहे फीलिंग्स, थर्ड आहे इवोल्यूशन, फोर्थ आहे एनालिसिस, फिफ्थ आहे कंक्लूजन, सिक्स्थ आहे एक्शन प्लान. What is the last stage in Gibbs reflective cycle? गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल में लास्ट स्टेज कहिड़ी आहे? हिन क्वेश्चन जो आंसर तव्हां कमेंट सेक्शन में ॿुधायो. क्वेश्चन 9. Who developed Gibbs reflective cycle? गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कंहिं डेवलप कयो? ऑप्शन ए ग्राहम गिब्स इन 1988, ऑप्शन बी नील गिब्स इन 1980, ऑप्शन सी बेंजामिन गिब्स इन 1999. In 1988, Graham Gibbs developed Gibbs reflective cycle. 1988 में ग्राहम गिब्स डेवलप कयो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल. राइट आंसर ए. अचो त एक्सप्लेनेशन पढ़ूं त गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल आहे छा. गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल हिकु स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क आहे जेको डेवलप कयो 1988 में ग्राहम गिब्स to help people learn from their experiences. It is a popular tool in fields like healthcare and education. Healthcare ऐं एजुकेशन जहिड़नि शोबनि में ही तमामु पॉपुलर टूल आहे because it breaks down an event into 6 clear stages, allowing for deeper self-reflection than just thinking about what happened. गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल जे 6 स्टेजिस खे फॉलो कंदे सेल्फ रिफ्लेक्शन बि करे सघूं था. Question 10. In Gibbs reflective cycle, which stage involves asking what was good or bad about the experience? Option A description, option B analysis, option C evaluation, option D action plan. In Gibbs reflective cycle, evolution stage involves asking what was good or bad about the experience. गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल में इवोल्यूशन स्टेज में पुछा कई वेंदी आहे त छा थियो सुठो या ख़राब एक्सपीरियंस में. राइट आंसर सी इवोल्यूशन. Question 11. Who is considered a major proponent of reflective thinking in education? Option A B.F. Skinner, option B Jean Piaget, option C Johann D. Davy, option D Lee Vygotsky. Johann Davy is considered a major proponent of reflective thinking in education. जोहन डी डेवी मेजर प्रोपोनेंट आहे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो एजुकेशन में. राइट आंसर सी. क्वेश्चन 12. रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन आर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय. रिफ्लेक्शन इन एक्शन ऐं रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन ॿई कॉन्सेप्ट कंहिं इंट्रोड्यूस कराया? ऑप्शन ए डेविड कोब, ऑप्शन बी डोनाल्ड स्क्योन, ऑप्शन सी ग्राहम गिब्स, ऑप्शन डी स्टीफन ब्रॉकफील्ड. रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन आर कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डोनाल्ड स्क्योन. राइट आंसर बी डोनाल्ड स्क्योन. क्वेश्चन 13. What, so what, now what is a reflective model developed by? Option A Gibbs, option B Davy, option C Rolf et al,
ऑप्शन डी स्क्यून। What, so what, now what is a reflective model developed by Rolf et al. Right answer C. Question 14. Reflection in action refers to. Reflection in action छाखे रेफर करे थो? ऑप्शन ए thinking about a lesson after it is finished. ऑप्शन बी thinking about a lesson before it starts. ऑप्शन सी thinking while actively teaching to make immediate adjustment. ऑप्शन डी analyzing student test scores. Reflection in action refers to thinking while actively teaching to make immediate adjustment. Reflection in action refer करे थो थिंक करण एक्टिवली टीचिंग जे दौरान इमीडिएट एडजस्टमेंट ठाहिण लाइ। राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15. Reflection on action is described as. ऑप्शन ए analyzing teaching after the event. ऑप्शन बी making decisions during the lesson. ऑप्शन सी planning before entering the class. ऑप्शन डी recording attendance. Reflection on action is best described as analyzing teaching after the event. Reflection on action बेस्ट डिस्क्राइब करे थो एनालाइज करण टीचिंग खे इवेंट खां बाद में। राइट आंसर ए एनालाइजिंग टीचिंग आफ्टर द इवेंट। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾींदा त तव्हांजा केतिरा क्वेश्चन्स करेक्ट थिया। जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि अचे त सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे, शेयर कयो वीडियो खे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।